Hello, friends. Welcome to this spiritual journey. This journey I be undertaking with all of you interested in the spirituality, in which I be explaining the things as well as giving you the practice. And this will be in bilingual, हिंदी एंड इंग्लिश. दोस्तों आप सबका स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ. ये यात्रा मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उसका अभ्यास भी कराऊंगा. इसमें आपका सहयोग चाहिए. आई एक्सपेक्ट cooperation from all of you because this will be in bilingual language. So part of it you may be understanding, part of it you may not be understanding. If you are not familiar with the other language, kindly bear with it. I be explaining the things uh, quite clearly in a way that one can easily understand. मैं समझाने की कोशिश करूंगा बहुत सरल तरीके से जिससे आम आदमी आराम से समझ सके. And I be explaining the things in a scientific way. My this philosophy will be scientific based. मेरा जो समझाने का तरीका होगा वो वैज्ञानिक होगा, ट्रेडिशनल नहीं होगा. आज पहला सेशन है तो थोड़ा एक दूसरे के बारे में मैं अपने बारे में कुछ समझा बता दूं. And since this is the first session, so let's just introduce ourselves. Let me introduce myself. My name is Sanjeev Sarin. I am from Allahabad, India, practicing under a master last 27 years. Meditation in the name of Kriya Yoga meditation. मेरा नाम संजीव सरीन है. मैं इंडिया इलाहाबाद से हूँ. पिछले लगभग 27 वर्ष से मैं ध्यान साधना क्रिया योग मेडिटेशन जिसको बोलते हैं वो सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ. और जो सीखा है और सीख रहा हूँ उसको आप सबसे शेयर करने की मेरी ये कोशिश है. And whatever I have learned, I am learning. This attempt is for sharing of my that knowledge. And I'm, I can say that I am not a realized master, but I am in the process. I find I have evolved sufficiently. I can feel it, I can realize it. I know the things, not just know, I have experienced the thing. So, in a very responsible way, I find that I am quite competent to pass on the things which I should, and I am trying to do that. यो जिम्मेवारी के साथ ये जो ज्ञान है, क्योंकि मैं अभी रियलाइज मास्टर नहीं हूँ. रियलाइज मास्टर का मतलब समाधि, लेकिन उस स्टेज से पहले भी आपको बहुत कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है. तो मैंने क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जिससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं सही मार्ग पर हूँ. Even if I am not realized, but I have experienced things to a large extent, which give me confidence and very clear idea that I am on the right path. I am experiencing God, and I have experienced it. So, in the all true sincerity, with the true sincerity, my whole purpose of passing on this knowledge is for the benefit of all seekers. पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेरा इसके अंदर सिर्फ मकसद एक ही है कि जो मेरा ये ज्ञान है वो मैं इसको आगे पास ऑन करूं. अपने बारे में बता रहा था, ध्यान कर रहा हूं और मैं ऑथर भी हूं. मैंने 6 किताबें
मेरा नीश जो है स्पिरिचुअलिटी है। मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं as I was saying that my niche is spirituality. I'm an author also. I have published 6 books uh, so far. My first book had been in Hindi poetry, which was again on spirituality. ईश्वर कौन कहाँ को, ये मेरी पहली बुक थी. God, who, where, and why. So, on various dimensions, various aspects of life, holistic responses have been covered. Then the second book, because I'm being from science background, so what science says, what spirituality says, what is the linkage? So, my second book, spirituality through science. This is how this book came. तो मेरी दूसरी किताब है spirituality through science, जिसमें विज्ञान क्या कहता है और हमारा आध्यात्मिक विज्ञान, वो भी विज्ञानों का विज्ञान है, वो कोई मिथ नहीं है। जो इतने संत लोग बैठे हुए हैं अपना ध्यान कर रहे हैं, वो वो क्या कहते हैं, वो दोनों में क्या समानांतर है, वो मैंने इसके अंदर कवर किया है. सो व्हाट आवर सेंट्स से, व्हाट आवर स्क्रिप्चर से, एंड व्हाट द वेरियस इन्वेंशन से, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन देम इज ए कंप्लीट रिसर्च. ये किताब मेरी पूरी वो रिसर्च है, 15-20 साल का इसके ऊपर मेहनत है. So this book is a culmination of my 15-20 year of my research on science and spirituality. Then this book, one on one thought provoking questions of life, ये मेरी तीसरी बुक है. 101 थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस जीवन के ऊपर, जिसके अंदर ईश्वर के ऊपर, सेल्फ के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर, कर्मा के ऊपर, वगैरह वगैरह, उसके क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है. सो दिस बुक स्टार्ट्स ऑन गॉड, सेल्फ, लाइफ, कॉन्शियसनेस, कर्मा, like that, meditation. So this is a part one. Part two is going to come, in which I be talking on gurus, ashrams, and reincarnation. सो इसका पार्ट टू जो होगा वो भी आने वाला है, जिसके अंदर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ गुरु के ऊपर, गुरुओं के ऊपर क्या हमारे क्वेश्चन आंसर है, आश्रम के बारे में, एंड दिस एंड अदर सच एस्पेक्ट्स. तो ये इसके अंदर नेक्स्ट बुक मेरा उसके अंदर आएगा. होलिस्टिक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइफ, ओल्ड एज एंड द रिटायरमेंट ईयर, ये मेरा नेक्स्ट बुक था. इसके बाद जर्नी टू गॉड, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है. इसके बाद मेरा ये बुक है जर्नी टू गॉड. हु एम आई, हु इज गॉड, हु क्रिएटेड गॉड, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, हु क्रिएटेड गॉड, एंड व्हाई ही क्रिएटेड, एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड. ये किताब है जिसके अंदर मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ईश्वर को किसने रचा है, और ये सृष्टि की रचना किसने की, और क्योंकि मेरा इसके साथ क्या संबंध है, मेरे होने का क्या मतलब है. ये क्वेश्चंस जो हैं, जो हमेशा लाइफ में बने रहते हैं, उसको आंसर करने की कोशिश की गई है. सो दिस बुक हैज ट्राई टू आंसर दिस प्रोफाउंड क्वेश्चंस व्हिच रिमेन within everyone, and answers are not so easily available. So this book has tried to reflect on those aspects which are important. ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन के आखिरी समय में आप चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर हो, पीएचडी हो, आप रिसर्च किए हो, बहुत इन्वेंशंस किए हो, आपने सब कुछ ज्ञान पा लिया हो, 4-4 पीएचडी किए हो, नोबेल लॉरेट हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको नहीं मालूम कि आप कौन हैं, so you be leaving the words unsatisfied. Even if you happen to be Nobel laureate, having doctorate in many subjects, having done many researches, you must maybe having even patents against your name and done many inventions. But if at the end of the day you find you don't know about yourself, then it's all be very dissatisfying and disheartening while leaving the world that you don't know self. So these are important questions. Uh, but that remains the knowledge. Even if you come to know about God, that too is also a good progress. अपने आप में ये भी एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है. ये पार्ट स्टेप वन है. स्टेप वन है ये जानना, आप उसी डायरेक्शन में ही हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो एंड नहीं है.
आपने पता कर भी लिया कि हाँ आप कौन हो, ईश्वर कौन है, लेकिन इज नॉट इनफ, वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी इंटेलेक्ट बुद्धि तक ही रहेगा, because then it won't be sufficient. That will remain at the intellect level. It won't serve the purpose because they will find that your behavior, it has not sink into your psyche. आपके अंदर वो अभी पूरा आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में वो ट्रांसलेट नहीं हुआ. इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड द नॉलेज विच यू गेन. इट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू योर activity, into your action, into your behavior, understanding about self, dealing with the others, about the life situations. If it has not translated, it means it has remained only at the intra level. So that is where the realization part is important. You understand that? It's not about knowing God. You remember what Jesus said? He says, seek the kingdom of God. Jesus didn't say to find God. जानिए ईसा मसीह ने क्या कहा है? ईश्वर के साम्राज्य को खोजें, ईश्वर को पाए नहीं, क्योंकि पाना नहीं है, आप ईश्वर तो है ही है, ईश्वर के साथ जुड़ना है कहाँ पे? उसका साम्राज्य कहाँ है? वो साम्राज्य कहाँ है? साम्राज्य क्या है? ये नहीं बोला कि ईश्वर को के साथ जुड़े, ईश्वर के साम्राज्य, साम्राज्य सारा तरफ है, किसी विशेष जगह पे नहीं है. एंड किंगडम इज एवरीवेयर, नॉट जस्ट एट वन प्लेस. सो हाउ टू गेट द रियलाइजेशन? That is what the part two of the journey comes in, which is the realization part. उसको रियलाइज कैसे करें, आत्मसात कैसे करें, वो जो ज्ञान जो है उसके साथ एक कैसे हों, हाउ टू बिकम गेट one with that knowledge, how to assimilate that, that is the realization part. So my new book came up, which is yoga. Is traditionally, because the yoga came from India, so traditionally, spiritually speaking, it used to be called a yoga. So we'll be talking on all these things as we progress. So right now, it was just about introduction part of it, just to say that uh, at what level in my own spiritual journey, I am also in the spiritual journey. I have not reached the end. मैं भी अपना यात्रा में ही हूँ, और आखिर में अभी अपना पूरा अपनी मंजिल पे आखिर पे नहीं पहुंचा हूँ. But still in the process, whatever I am finding, whatever I am learning, whatever I am experiencing, so I am trying to pass it on to you, because sooner or later you all will be following this path, whether this life or 10 lives to come after that, that's a different thing. But there is no other way. और कोई रास्ता नहीं है. आप सबको भी इसी रास्ते पे ही आना है. मैंने चाहे मंजिल पे नहीं अभी पहुंचा हूँ, रास्ते में हूँ, अपनी यात्रा पे हूँ, लेकिन उस यात्रा में मैंने क्या अनुभव किया, क्या सीख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या पा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं अपना जो शेयर करना चाह रहा हूँ अपने उन सभी भाई बहनों के साथ जो इस यात्रा पे हैं या चलने की सोच रहे हैं. जरूरी सब्जेक्ट है चाहे, लेकिन सभी आदमी अभी रेडी नहीं होते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन देर सवेर चाहे इस जन्म में चलें, चाहे 10 जन्म के बाद चलें, लेकिन ईश्वर ने ये फ्री विल आपको दी है. गॉड हैज गिवन यू द फ्री विल. नोबडी कैन फोर्स यू. इफ यू डोंट डिसाइड टू स्टार्ट दिस जर्नी इन दिस लाइफ, इज यू आर वेरी फ्री. आप पूरे स्वतंत्र हैं. आप ये यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी इस जन्म से करना चाहते हैं कि 10 जन्म के बाद करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रहे हर जन्म में ये समस्याएं, दुख, तकलीफ, ये लाइफ के रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे, ये खत्म नहीं होंगे. So remember, whether you want to decide to continue start this journey in this life or after 10 incarnation,
You are totally free. God has given you the free will. Nobody can injure us on that. You are totally free. But do remember this thing, that the life, every life, if this life you find had been full of pains and pleasure, good and bad, suffering, nobody is free from that. Nobody is free. Whosoever you find on this earth is free from all these things. If it is like this, it had been in this life, then remember it had been the past lives also, and it will be in the lives to come. So why not? Why don't we start this journey today itself? ये दुख तकलीफ अगर आज इस जीवन में हमें दिख रहे हैं, तो ये पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये यात्रा आज से क्यों ना शुरू करें? क्यों हम और सफर होना चाहते हैं? अब आप कहेंगे, क्या इस यात्रा से हमारे वो ट्रस्ट खत्म हो जाएंगे? याद करें, लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा था? Now the question may come that if we start this spiritual journey, will our suffering be over? Yeah, important question. I say yes. Spirituality promises that. Lord Krishna promises that. भगवान कृष्ण प्रॉमिस करते हैं इस चीज के ऊपर। गीता में कहा गया है कि सफरिंग खत्म होगी। कैसे खत्म होगी? इसी से, ईश्वर से जुड़ने से। कैसे? साइंस है। How our suffering will be over? By being one with God. And it's a science, it's a step by step method. And this is what our journey is going to be. हमारी ये यात्रा यही होगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चल के हम ईश्वर से जुड़ते हैं, और जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो सफरिंग से ऊपर उठ जाते हैं। I was talking about Lord Buddha. You remember when he came across an old person, sick person, a person dying, person going from all these things, he felt something is not okay. Do I also have to undergo all these things? He was told yes. याद है लॉर्ड बुद्धा को, उनका सिद्धार्थ जब थे, प्रिंस सिद्धार्थ, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी है, बीमार आदमी है, कोई आदमी मर रहा है, तो उन्होंने कहा क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? कहा गया यस, सबके साथ होगा। तो उन्होंने इसकी खोज करनी शुरू की कि इनका मतलब क्या है। Then he started this divine journey, and it took 14 years. उनको 14 वर्ष लगे, और उन्होंने यही कहा, ये जीवन दुखम दुखम। He said the same thing. This world is full of sorrows and sorrows. But he said, but did those suffering then disappeared in his life after 14 years? The questions come. प्रश्न ये आता है, क्या 14 वर्ष के बाद सिद्धार्थ के जीवन में क्या वो दुख खत्म हो गया? क्या बूढ़ा आदमी नहीं होना, खत्म होना बंद हो गया? बीमार होना बंद हो गया? मृत्यु बंद हो गई? Whether in the life of Siddhartha or anybody else, this is this. I mean, the situations of getting old and getting sick and dying finished? No, it's still continuing, and definitely it remained. When Siddhartha was also there, जब सिद्धार्थ थे, तब उनके जीवन में भी रहा, 14 वर्ष के बाद भी खत्म नहीं हुआ, और आज भी खत्म नहीं है, और होगा भी नहीं। लेकिन वो उससे ऊपर उठ गए। नो, इट डिडंट एंड, बट he became Gautam Buddha. He came above those suffering. So that is what we are starting our journey, to come above those suffering.
अब you may say कि how? See, the sufferings are like two arrows. I am just giving you one example. Sufferings are like two arrows. One arrow is from your past karma, the society, the environment, family, friends, various situations. You may or you may not be having any control. It may be mostly because of your own past karma. Good and bad deeds is a different chapter. We'll talk on that in someday. But karma, law of karma is there. So, and once that arrow is out from the bow, is going to hit. Is already out. Nothing can be done. You are born in a particular situation, in a particular family, in a particular set of environment, in a particular country, city, and all these things, and all those situations you are going to come across in life is already preordained. एक दो दो तीर हैं बताते हैं जो सफरिंग के होते हैं। एक तीर है आपका अपने पास कर्मों की वजह से, जो वो एक अलग विषय है, इसके ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन उसमें उसकी वजह से हम किस घर में, किस हालात में, किस शारीरिक अवस्था में, किस मानसिक अवस्था में हम पैदा हो रहे हैं और क्या जीवन में क्या-क्या घटित होगा, सब पहले से लिखा जा चुका है। लेकिन इस पे भी काम हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जो सीड ऑफ कर्मा है वो उसको आप जला सकते हो। लेकिन हम वो इतना ईज़ी नहीं है, बहुत आगे की अवस्था है, हम छोड़ें। लेकिन दूसरा तीर क्या है? So first arrow we said it is because of our karma. When ordinarily we may not be having any control over it, is already out. We have to face. We have to face it. Okay. And but still, Lord Krishna says, he says that you become one with me, you can burn the seeds of karma. But that is a very high stage. Is not commonly, ordinarily, person can do it. But still, it's possible that seeds of karma can also be burned. But the this journey is not to address your that one arrow which is already out. This journey is to address the second arrow. तो ये यात्रा जो हमारी आज शुरू हो रही है, जिसका ये पहला सेशन है, ये उस पहले तीर को नहीं एड्रेस कर रहा बल्कि दूसरे तीर को। So this first session is going to address the second arrow. The second arrow is our perception. So, how you perceive the pains, pleasure, good and bad feeling from the first arrow is up to you. And it is not same with everyone. दूसरा तीर वो है कि हम वो पहले तीर से क्या हम परसीव कर रहे हैं, कितना उससे प्रभावित हो रहे हैं। हर आदमी ये जैसा प्रभावित नहीं होता। हर एक का प्रभाव होना अलग-अलग है और वो इसके ऊपर निर्भर करता है हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारी मनोदशा, हमारी इग्नोरेंस, हमारा नॉलेज इसके ऊपर। एंड दैट perception depends on our own conditioning, our knowledge, our ignorance about the things. How we treat them is different with everybody. So, this was just to give a broad idea that what we are going to do and why and what are we going to get out of it. तो ये एक आइडिया देने के लिए था मोटा मोटा कि हम इस यात्रा में क्या हासिल करेंगे और क्यों उस जरूरी है
and why that is important. This is also important. The explanation was just to give you that. And I have already said I be doing it in a very responsible way. I will not be talking much on the traditional पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये सेशन स्टैंडर्ड करूँगा और इसमें जो हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगा। वाई रिस्पॉन्सिबली? बिकॉज देयर आर ऑलरेडी मैनी lines of spirituality myth and all these things in the market, and our scriptures, this ancient scriptures of eastern side, they forbid talking on explaining on those scriptures if you are not evolved enough, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा गया है, इधर भारत के बहुत से धर्मों में जो लिखा गया है, शास्त्रों में ही लिखा गया है कि आपकी अगर वो अवस्था नहीं है जिसको कि शूद्र अवस्था बोलते हैं, कि शूद्रों को मना था अध्यात्म का करने के लिए, तो आप अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। The scripture says that those people, if they're not in the right stature in spirituality, if they try to um, uh, explain the scripture, so they will do disservice to it. Instead of, they may not come up with the right explanation, and what they will deliver, they will that can do much damage to the people. So I am careful enough that I don't say something which can be, which can shift you away from spirituality or from your path, natural path. तो आपका एक नेचुरल पाथ है, हम सब स्पिरिचुअल यात्रा पे हैं, चाहे ना चाहे भी हम उसी यात्रा पे हैं, willing or unwillingly we all are on the spiritual journey. That's our natural course. तो वो लेकिन हमारा जो नेचुरल कोर्स है बहुत लंबा है, तो कुछ गलत मैंने कुछ बता दिया और आपकी यात्रा अगर लंबी हो गई, आप भटक गए, उसका दोष मुझे लगेगा। तो मैं ऐसी कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिसका कि मुझे खुद ज्ञान नहीं हो। So I won't be explaining anything on for which I don't have knowledge, experience myself. It won't be any bookish knowledge, because bookish knowledge, if it's not experienced by me, if I pass on to you and you are understood in a different way, it can disarray you, it can shift you from your natural path, and I be owning the bad karma from you. So I be doing it very responsible way. I think enough of this explanation to start with. So welcome once again. Welcome you all on this spiritual journey. So this is was session number one. So continue this session two, session three. This will be continued. As I said, that this will be explanation and practice. So आप सबका स्वागत है एक बार फिर से, और ये सारा सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। ये सेशन वन था, इसी तरह से सेशन टू, सेशन थ्री हमारे वो चलते रहेंगे, जिसके अंदर अभ्यास भी होगा, एक्सप्लेनेशन भी होगी। ईश्वर आप सबकी मदद करे। गॉड बी विद ऑल ऑफ यू, गॉड हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।